Good evening, everyone. Am I audible? Yes, madam, you are. Okay. Uh, Okay, just thank you. give me another 2 minutes. I will start it. Okay, Oh, please. oh, okay. Okay, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. So, anyone from Team Dr. Nature? Shall I start? Uh, Anyone from Team Dr. Nature? Okay. So, we are going to start the meeting. Shall we start? Yes, sir. Okay, fine. Thank you. Thank you. So, टीम डॉक्टर नेचर्स के सभी मेंबर्स को और सभी स्टेक होल्डर्स को मैं डॉक्टर विनोद गौतम दोबारा वेलकम करता हूं। और आज के इस सूत्र 33 के डे 3 पे जो टॉपिक लिया गया है दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट कैंसर, और उससे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, या कैसे हम या डॉक्टर नेचर्स के साथ मिलके किस तरीके से इतनी खतरनाक बीमारी के साथ हम अपने आप को या जो सोसाइटी है उसकी मदद कैसे कर पाएंगे, उसके बारे में डॉक्टर अनीता, जो कि ऑलरेडी लास्ट टाइम भी शायद आपसे कई बार हमने लेक्चर लिए होंगे, और डॉक्टर अनीता कई बार आपके साथ ऑलरेडी इंटरेक्शन कर चुकी होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि प्रोस्टेट कैंसर जैसी डिजीज को आपको समझाने में और उसको किस तरीके से उससे रोकथाम की जा सकती है, उसमें आज का ये प्रोग्राम आप लोगों की और सोसाइटी की काफी हेल्प करने वाला है। और इससे पहले कि मैं डॉक्टर अनीता को इनवाइट करूं, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि प्रोस्टेट कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सेकंड मेन कोज ऑफ द कैंसर इन मैन। मतलब आदमियों में अगर सबसे ज्यादा कोई कॉमनली पाया जाने वाला कैंसर है तो ये सेकंड कैंसर यही है पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया। और आश्चर्य की बात यह है कि लगभग 12 आदमी दिल्ली में 1 लाख पे हर साल प्रोस्टेट कैंसर के शिकार होते हैं। तो बड़ी गंभीर बीमारी है, लेकिन आयुर्वेद इसका भी एक इलाज देता है। आयुर्वेद इसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रिवेंशन में हेल्प करता है।
तो इसी उम्मीद के साथ मैं डॉक्टर अनीता से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने इंटरेक्शन को शुरू करें और आप सभी का वापस से डॉक्टर नेचर की तरफ से पुनः स्वागत और मैं आपका वापस से अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू डॉक्टर अनीता। Sir. या प्लीज प्लीज। Thank you, sir. So, good evening, everyone. Today, my topic of presentation is prostate cancer. Next slide. So, prostate gland. So, जो ये prostate gland ये पुरुष और पौरुष ग्रंथि बोलता है. So, this ये अवयव means males में ही है, and this prostate gland is a male reproductive organ. तो ये reproduction के लिए help करने वाले एक organ है prostate gland, and that surrounds the urethra and produces fluid that nourishes the transport and transports the sperm. तो ये जो ग्रंथि है, ये gland है, it's a gland, it's a gland, and ये जो gland है हमारा मूत्राशय के नीचे, as you can see in the picture, फोटो में आप देख सकता है, ये मूत्राशय है, ये डोम वाला वो है मूत्राशय है, और उसके नेक के सामने वो ट्यूब के सामने ये जो प्रोस्टेट होता है वो कवर करता है, वो जो पूरा यूरिथ्रा जो मूत्र को हमारा मूत्राशय से बाहर लेकर जाता है वो यूरिथ्रा कहता है, और यूरिथ्रा को कवर करता है. एंड the proper or the function of this gland is it produces a fluid. It produces a fluid and it is nourishing the sperm. जो sperm जो testis से जो ऊपर आता है उसको ATP या एनर्जी देने के लिए ये prostate gland का fluid is helping in the nourishment of the sperm. Then it is located below the bladder and surrounds the top of the urethra. आप वो फोटो में देख सकता है, ये bladder को cover करता है. So it's just below the bladder in the top of the urethra. And its function is primarily to produce seminal fluid, the milky fluid that carries sperm during ejaculation. जो sperm को movement करने के लिए और फ्री फ्लो करने के लिए और नरिशमेंट देने के लिए ये सेमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, मिल्की फ्लूइड, एंड जो स्पर्म को इजैकुलेशन टाइम में हेल्प करता है. देन मसल इन द प्रोस्टेट पुश सेमेन इनटू द यूरिथ्रा एंड आउट. सो ये इसके अंदर लॉब्स है एंड जो थोड़ा सा मसल्स भी है और वो भी ये इजैकुलेशन में हेल्प करता है. सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड. Next slide. So moving on with the cancer of prostate, it's the most common malignant tumor in men over the age of 65 years. So abhi sir ne bataya it's the second commonest cancer in men, but it is the most only after the age of 65. That is very important. ये जो ओल्ड एज में ज्यादा दिखता है, ये यंग जो मर्द है उसमें उतना ज्यादा नहीं दिखता है. सो इट इज द मोस्ट कॉमन, सेकंड मोस्ट कॉमन इन द वर्ल्ड एंड ऑल, बट ये जो है ये 65 के बाद ही ज्यादा दिखता है. एंड इट्स अ कैंसर ऑफ 80s, 70s एंड 80s. सो ओल्ड एज में जो ज्यादा दिखता है. In histopathological study performed in autopsy, because ये autopsy क्यों करता है? autopsy का मतलब है पोस्टमार्टम से ही हम ये हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ज्यादा करता है, क्योंकि ये जो बीमारी है 70s 80s के बाद आता है, और यूजुअली ये एज में पेशेंट्स इसका करेक्ट इलाज नहीं करता है. करेक्ट इलाज नहीं करते तो, और ये एक कारण होता है मरण का भी. ये ऐसा जेंट्स का मरण का भी एक कारण भी होता है ये प्रोस्टेट कैंसर. पहला प्रोस्टेट में कैंसर होता है और बाकी जगह में स्प्रेड कर कर मोस्ट ऑफ द टाइम्स द रीजन फॉर द डेथ ऑफ सच पीपल विल बी दिस प्रोस्टेट कैंसर. वो अनडायग्नोस्ड होता है. अनडायग्नोस्ड मतलब ये एक एज के बाद ये मूत्र में
कम मीन्स अच्छे से नहीं फ्लो होना, ये सब इंसान समझता है कि ये ओल्ड एज का प्रॉब्लम है। सो इसलिए डॉक्टर के पास ऐसा लोग नहीं आता है। 65 इयर्स के प्लस का आदमी ऐसा सोचता है कि ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं आता है। सो जैसा इसका means researchers and all was conducted mostly in the autopsy, in the postmortem, shows increasing frequent foci of microscopic prostate cancers are found in increase in age. So as age जो age बढ़ता है, ये prostatic micro cancer का means chances or incidents are more seen in men. And these foci of prostate cancers have variable potential for progressing clinical to metastatic disease. And about 10 to 15% of the younger men who develop prostate cancer. So younger men also develop prostate cancer, but see the ratio, it's only 10 to 15% have positive family history of the disease, but the etiology is unclear. तो जो यंग एज में जो पेशेंट्स आता है हमारा क्लिनिक में, उनका फैमिली हिस्ट्री हम देखते तो फैमिली में either parents or grandparents or their parents siblings, they will be the father and their siblings may be having the issue of this prostate cancer. Next slide. So prostate cancer is the carcinoma of prostate gland that may spread to other parts of the body, particularly bones and lymph nodes. So cancer एक बीमारी है जो what main definition of cancer is that हमारा शरीर में सब सेल्स डिविजन होता है, सेल्स बढ़ जाता है, मगर एक एज के बाद हमारा सेल्स थोड़ा वियर एंड टियर, जो हमारा स्किन सेल्स जाता है, ऐसा वियर एंड टियर के लिए ही मींस ग्रोथ होता है। बाकी नेल्स, हेयर, बाकी सब कुछ जैसा ग्रोथ होता है, मगर किसी जगह में किसी ऑन्कोजीन्स का वजह से ये माइटोसिस नाम का ये सेल ग्रोथ रैपिड होता है, या कुछ दैट इज फैमिलियल से ये माइटोसिस नाम का सेल डिविजन ज्यादा होता है किसी जगह में, और उधर ये सेल्स ज्यादा ग्रोथ होता है और एक ट्यूमर या कुछ मास उधर बन जाता है, या कुछ अदर सोर्सेस से जो फैमिलियल हिस्ट्री नहीं होने वालों को अदर सोर्सेस से, जैसे कि जंक फूड ज्यादा खाने से, या रेडिएशन लाइक एक्सरे और अदर रेडिएशन का एक्सपोजर से, ऑक्यूपेशन के वजह से, काम के वजह से, या कुछ अभी अभी नया नया रिसर्च है कि टाइट कपड़े पहनने करने में ऐसा इरिटेशंस होता है शरीर में, ऐसा इरिटेशंस ट्रिगर करता है ये ऑन्कोजीन्स को, एंड ऑन्कोजीन्स ऐसा ट्रिगर कर एक्टिवेट होकर ये कैंसर को प्रोड्यूस करता है। तो ये एंड कैंसर को प्रोड्यूस करता है कि एक ग्लैंड में, जैसे कि प्रोस्टेट है, लीवर है, ब्रेस्ट है, यूट्रस है, उधर एक मांस का मास बन जाता है, एंड जो मांस का मास जो होता है वो ज्यादा कम टाइम्स में ज्यादा साइज आता है, तो उसको हम मैलिग्नेंट ग्रोथ कहता है। ये कैंसर ग्रोथ में दो प्रकार का होता है, बिनाइन भी होता है, मैलिग्नेंट भी होता है। बिनाइन जो है वो स्प्रेड नहीं होता है, उसका शेप वगैरह थोड़ा साइज शेप वगैरह है ना, धीरे धीरे ही वो ग्रो होता है, मगर कैंसर ग्रोथ ऐसा नहीं है, ये तो रेगुलर नहीं होता है, इरेगुलर होता है, और ऐसा स्पीड में वो ग्रो करता है, और वो ग्रो कर सामने वाला जो अवयव है या कुछ टिश्यूज है उसको टच कर डायरेक्ट स्प्रेड करता है। लाइक किडनी में एक ग्रोथ है, वो किडनी के सामने वाला वर्टिब्रे को भी वो स्प्रेड करता है, या हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि ये ग्लैंड जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है, ये इसमें एक ग्रोथ आए तो ये स्प्रेड होकर यूरिनरी ब्लैडर को भी ये मेटास्टेसिस देने का चांसेस है। तो
मगर ये prostate gland is giving the metastasis to other parts of the body, particularly bones. Bones in the sense the pelvic bone, जो हमारा hip होता है, यो pelvic bone, spine उस तरह metastasis करता है, and lymph nodes को भी, क्योंकि ये तो हमारा बड़ा वाला inguinal lymph node के सामने है, so lymph nodes को भी spread करता है. Then CA prostate occurs in the peripheral zone in the prostatic gland proper, that is commonly in the posterior lobe. So prostatectomy of the BPH does not confer protection against development of this carcinoma. And this is a big scenario because BPH जो होता है benign prostatic hypertrophy, ये जो बीमारी है, it is a commonest disease among males. जो 50 के बाद ये पेशेंट को मूत्र धीरे धीरे चलना, मूत्र आगे नहीं चलता है, और थोड़ा आता है और रुकता है, और थोड़े टाइम के बाद आता है, ऐसा क्लिनिकल फीचर्स होता है. और वो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एक छोटा सा ग्रोथ होता है, वो कैंसरस नहीं, कैंसर ग्रोथ नहीं, वो एक बिनाइन ग्रोथ है, नॉन कैंसरस एक ग्रोथ होता है. तो ये जो होता है, ये प्रोस्टेट का अंदर का एक लॉब में होता है. तो इसके लिए जब इंसान सर्जरी भी करता है, इसके लिए सर्जरी करने के बाद लोग समझता है कि मेरा प्रोस्टेट अभी ठीक हो गया, मेरा प्रोस्टेट का प्रॉब्लम अभी रेक्टिफाई हो गया. सो बट ये प्रोस्टेट कैंसर ये सर्जरी करने के बाद नहीं आएगा, ऐसा सोचता है लोग. मगर द फैक्ट इज, इफ प्रोस्टेट बीपीएच का भी सर्जरी करने वालों को भी प्रोस्टेट कैंसर आने का चांसेस है, क्योंकि ये प्रोस्टेट कैंसर जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी जो होता है, वो लोब में नहीं होता है, ये तो पोस्टीरियर लोब में ये कैंसर सीए प्रोस्टेट का ग्रोथ ज्यादा होता है. सो बीपीएच एंड सीए प्रोस्टेट दो लोब में होता है. ये 5 लोब होता है ये पूरा प्रोस्टेट को, और ये पूरा प्रोस्टेट में दूसरा लोब में बीपीएच होता है, और पोस्टीरियर लोब में सीए प्रोस्टेट होता है. सो बीपीएच के लिए सर्जरी करने वालों को ये आने का भी चांसेस है, चांसेस नहीं, ये आने का ज्यादा चांसेस है. सो ये सर्जरी बीपीएच के लिए करने वालों को, this is not a protection against CA prostate. And the incidence of the prostate cancer in men over 80 years is 70%. See the age, 80 years, over 80 years, 80 साल से ऊपर इंसान को 70% chance है ये prostate cancer आने के लिए. And most of these neoplasms are tiny and may have remained latent for years. And this is also very important. 50 से ही ये शुरू मीन्स ये ग्रोथ शुरू होता है, बट ऐसा ही प्रोस्टेट के अंदर टाइनी नोड्यूल्स जैसा होता है, और ये एज एडवांस होने से इट विल कम आउट. नेक्स्ट स्लाइड. So the pathology, what is happening in this? Main site is the posterior lobe. As you can see in the picture, the prostate is ये जो हमारा urinary bladder के अंदर ऐसा encircle करता है, उसके ये ऐसा यूरिथ्रा है, तो यूरिथ्रे का जस्ट कवरिंग मीडियल लोब है, और 2 लैटरल लोब है 2 साइड में, और आगे और पीछे दो लोब्स है, और ये पीछे वाला लोब है, ये प्रोस्टेट आने का ज्यादा चांसेस है. कॉमनेस्ट टाइप है पीछे वाला लोब को. तो ये जो यूरिथ्रा है, तो ये पीछे वाला लोब को ज्यादा आने का चांसेस है. सो कार्सिनोमा अराइजेस in atrophic non-hypertrophic areas, and in particularly in the posterior lobe compressed by nodular hyperplasia. So most commonest site is the posterior lobe, and it is obvious that prostatectomy, which leaves most of the posterior lobe, is of no guarantee against the subsequent development of the carcinoma in that lobe. तो पोस्टीरियर लोब में जब बीपीएच होता है, बीपीएच के लिए भी हम सर्जरी कर दिया, पोस्टीरियर लोब भी हम काट दिया, मगर थोड़ा बाकी है, तो भी उधर भी कैंसर आने का चांसेस ज्यादा है.
Few carcinomas may be found within the hyperplastic BPH, benign prostatic lobes. So the other chances are ये BPH का थोड़ा बाकी भी होने का chances है. That is hyperplastic benign prostatic lobes. And these tumors are usually very small and are called occult or academic cancers and are often completely removed by interscalpular enucleation of the enlarged gland. So उसका एक सर्जरी के द्वारा ही we will be enucleating, scoop कर ये बाहर निकलता है. Next slide. So macroscopic features. Macroscopic features का मतलब है जो हम बाहर कैसा दिखता है. So you can see in the picture, ये prostate है और prostate के अंदर एक growth है. So growth will be very hard in consistency, and this hard in consistency is the typical feature of cancer. A hard consistency, ये जो हम टच करते तो it will be ये पत्थर जैसा hard होता है. ये जो prostate के अंदर जो ग्रोथ वगैरह है तो वो ग्रोथ वेरी हार्ड होता है, स्टोनी हार्ड जैसा हार्ड होता है, एंड डेंस कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द ब्रेस्ट एंड ऑल. देन फील्स लाइक ग्रिटी सेंसेशन ऑफ द नाइफ, जैसा नाइफ के शार्प एज के ऐसा ग्रिटी फीलिंग होता है. देन surface will be irregular. That is also a feature of carcinoma or the cancer. और जो है लैक ऑफ लॉबुलेशन, इसके अंदर है ना लोब्स नहीं होता है, एक जैसा एक पत्थर जैसा एक यूनिफॉर्म मास ही दिखता है. नेक्स्ट स्लाइड. So microscopic features, in the macroscopic features you can see hard, gritty, stony like feeling. In the picture you can see it will be very hard to in touch. So microscopic features में main thing is उसके अंदर ये जो ग्लैंड है उस दिस इज अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर. तो इसके अंदर डक्स होता है. डक्स का मतलब जो ग्लैंड जो कुछ प्रोड्यूस करता है फ्लूइड, वो लेकर आने के लिए, ट्रैवल कर आने के लिए जो है डक्ट है. So duct and acini are there in the gland, but the microscopic pattern of the carcinoma of the prostate is adenocarcinoma and shows varying degrees of differentiation. So the carcinoma's growth which is there inside the prostate is adenocarcinoma. So ये याद करना है, adenocarcinoma is the main carcinomatous growth which is seen in the prostate cancer. And next is tumor will be anaplastic, easy to diagnose, and the confluence of acini, infiltration of the stroma, and the perineural lymphatics and the capsules are the characteristic features of this condition. So acini का मतलब है जो छोटा छोटा small hole like thing that will be producing the fluid. So this acini जो अलग अलग होता है वो एक बन जाता है. जैसा you can see in the picture, first picture normal, उसमें acini ऐसा होता है, और in the cancerous उसमें acini confluence होता है. ये थोड़ा उसका अच्छे सा it will be converging and confluencing. Then and the lymphatics etc. will be more seen. Next slide. So next is the spread. So macroscopic feature is very important to you. That is hard. It will be very hard, and it will be having gritty feeling. Then it will be irregular. Next is the spread. स्प्रेड में इस जैसा बाकी कैंसर स्प्रेड करता है, इसमें भी लोकल स्प्रेड होता है, ब्लड स्प्रेड होता है, लिम्फेटिक स्प्रेड होता है. लोकल स्प्रेड का मतलब है ये जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा और नियर बाय स्ट्रक्चर को ये ट्रांसफर करेगा, ये कैंसर सेल उधर भी ट्रांसफर करेगा. जैसा इधर प्रोस्टेट के अंदर एक ग्रोथ है वो बड़ा होकर
यूरिथ्रा को हार्म करेगा या यूरिनरी ब्लैडर को भी हार्म करेगा। नेक्स्ट इज ब्लड स्प्रेड। जो ब्लड इधर से, ये प्रोस्टेट से ब्लड अंदर देता है और बाहर निकलता है, वो ब्लड के अंदर ये कैंसरस सेल्स होता है। ये कैंसर सेल्स जो ये ब्लड को वापस हार्ट के ओर लेकर जाता है, वो टाइम में ये किधर किधर ये ब्लड का रिलेशन होता है, उधर तक ये वो एरिया, कॉमन ब्लड सप्लाई वाला एरिया में भी और ग्लैंड्स या ऑर्गन्स में भी इसका स्प्रेड होने का चांसेस है। नेक्स्ट इज लिम्फेटिक स्प्रेड। सेम लाइक द ब्लड, लिम्फ जो हमारा बॉडी से निकलता है, जो प्रोस्टेट से भी निकलता है, वो एक साथ कलेक्ट कर वो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, और उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वो भी स्प्रेड होता है। नेक्स्ट स्लाइड। So local spread, tumors, you can see in the picture, prostate cancer है और bladder ऊपर है. So tumors tend to grow upward to involve the seminal vesicles, the bladder and the trigone. So जो ये growth होता है posterior lobe में ज्यादा होता है, और ये growth ऊपर के तरह grow होता है। ये prostate के अंदर जो कैंसर बढ़ जाता है, वो ऊपर के तरह ग्रो करता है, एंड जो सेमिनल वेसिकल, जो सेमेन को लेकर आता है यूरिथ्रा के ओर, उस तरफ भी ये ग्रो करता है। सो सेमिनल वेसिकल में ये प्रॉब्लम होने का चांसेस है। देन ब्लैडर जो ऊपर है, ब्लैडर का वो नेक होता है, और ट्राइगोन, ट्राइगोन मींस द ब्लैडर का अंदर, अंदर वो ट्राइगोन ट्रायंगल शेप में है, उधर भी ये स्प्रेड होने का चांसेस है। नियर बाय स्ट्रक्चर्स को स्प्रेड होने का चांसेस है। That is the first spread. Later, tumors tend to spread distally to involve the distal sphincter mechanism. That is, ये जो prostate है, ये bladder के साथ means just near to that. But urethra जो थोड़ा नीचे है, उधर भी थोड़ा months और years के बाद उधर भी जाकर ये distal sphincter mechanism, जो यूरिन जाने के लिए और बंद करने के लिए जो मैकेनिज्म है, उसको भी डिस्ट्रॉय करने का चांसेस है। फर्दर अपवर्ड एक्सटेंशंस ऑब्स्ट्रक्ट द लोअर एंड ऑफ बोथ द यूरिटर्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन रिजल्टिंग इन एन्यूरिया। तो और टाइम के बाद ये ऊपर जाता है, ये यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर जाता है, और यूरिटर जो किडनी से ब्लैडर के और यूरिन को लेकर जाने वाला यूरिटर्स में भी स्प्रेड होता है, और यूरिटर्स में स्प्रेड होने के टाइम में यूरिन नहीं आता है, क्योंकि यूरिटर्स भी ब्लॉक होता है और यूरिन नहीं आता है। एन्यूरिया का मतलब है यूरिन नहीं आएगा। एंड द रेक्टम में बी स्टेनोज्ड बाय ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग अराउंड इट, बट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इज रेयर। एंड सबसे लास्ट में रेक्टम, जो हमारा मल को बाहर जाता लेकर जाता है, उधर भी डायरेक्ट स्प्रेड नहीं, मगर ये ब्लैडर से स्प्रेड होने का चांसेस है, क्योंकि ब्लैडर आगे है और रेक्टम पीछे है। सो ब्लैडर में स्प्रेड होते तो ब्लैडर से रेक्टम के ओर स्प्रेड होने का चांसेस है। तो उसके बाद मोशन जाने के लिए भी प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को होता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज ब्लड स्प्रेड. So spread by bloodstream occurs particularly to bones. So in this particular prostate gland, the जो blood जो इधर से drain होकर ये blood to the bones. So bones को bone metastasis is mainly by the blood spread. And prostate is the most common site of origin for skeletal metastasis, followed in turn by the breast, the kidney and the bronchus and the thyroid. So पहला blood ये cancer cells को skeletal metastasis, that is bone को देता है। ये hip bone जो होता है, vertebrae होता है, वो bone को देता है। एंड उसके बाद जो ब्रेस्ट में जाता है, इट इज जस्ट लाइक द सीक्वेंस, ब्रेस्ट में जाने का चांसेस है, किडनी, ब्रोंगस दैट इज लंग्स में जाता है, एंड थायराइड में भी जाने का चांसेस है। And most frequently involved bones by carcinoma are the pelvic bone or the hip bone and the lower lumbar vertebrae. जो बैक में फीड मींस बैक में होता है, वो lumbar vertebrae में भी जाता है। Sometimes patient may be coming to us with the backache,
जो बैक एक का कारण से ही पेशेंट आएगा, मगर मींस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें पता चलेगा इट मे बी अ CA prostate. And the femoral head, rib cage and the skull are other common sites, but it is a further जो ज्यादा टाइम के बाद ये फेमरल हेड, वो जो थाई बोन है और रिब केज है और स्कल में भी जाने का चांसेस है, कॉमन साइट्स है ये सब। तो ब्लड स्प्रेड, स्केलेटल मेटास्टेसिस का मेजर, बोन स्प्रेड का मेजर एक बीमारी है प्रोस्टेट कैंसर। नेक्स्ट स्लाइड। So lymphatic spread, the mainly lymphatic spread is through the obturator fossa, that is the thigh region. हमारा शरीर से वो पैर के ओर जाने वाला, from there और along the sides of the rectum lymph nodes, और बैक साइड में जाता है, वो जो मल जाने वाला साइड में, रेक्टम के साइड में जाता है। दैट इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट इज सेमिनल वेसिकल, जो सेमिनल वेसिकल में ड्रेन करने, उधर से वास्ट डिफरेंस एंड एक्सटर्नल इलियाक लिम्फ नोड। सो इंटरनल इलियाक लिम्फ नोड एंड एक्सटर्नल इलियाक लिम्फ नोड से लिम्फेटिक स्प्रेड होता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो हिस्टोपैथोलॉजिकल ग्रेडिंग, सो दिस इज जो पेशेंट हमारे पास आता है, हम सभी कैंसर को ग्रेडिंग करता है, जो वो मांस का जो मांस बढ़ता है उसका हिसाब से, और बाकी ये स्प्रेड होता है और मेटास्टेसिस और ये लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसा हम स्प्रेड को ग्रेड करता है। This is histopathological grading. Gx means grade cannot be assessed. G0, no evidence of anaplasia. G1 is low grade of malignancy. G2 medium grade and G3 is high grade of malignancy. जो हम blood samples या इसका cells से हम histopathological gradings करता है। Next slide. This is TNM classification. TNM classification is a universal classification for the cancers, any cancers. And in this also, T का मतलब है tumor, N का मतलब है lymph node and M का मतलब है metastasis. Metastasis का मतलब एक जो growth है उधर से दूसरा अवयव में spread जाएगा। So tumor का size से T1, T2, T3 ऐसा हम grade करता है। As a T axis, there is a tumor cannot be assessed. T1 is वो MRI या स्कैनिंग में विजिबल है, मगर हमें जो पैल्पेट या टच करने में नहीं दिखता है। दैट इज T1 एंड T2 इज ये प्रोस्टेट के अंदर एक ग्रोथ है जो कन्फाइंड है, तो हम T2 बोलेगा। T3 इज प्रोस्टेटिक, वो प्रोस्टेट ग्रंथि के बाहर ये आ गया, बाहर ये ग्रोथ आ गया, तो T3 बोलेगा। एंड T4 इज लाइक पूरा ये पेल्विक फ्लोर में या रेक्टम बाकी सब जगह में ये मीन स्प्रेड हो गया या बिग हो गया, तो उसको T4 कहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। एंड N इज लाइक N axis cannot be accessed, nodes can be not be accessed, N1 is nodes are involved, and M0 and M1 is also like that. No distant metastasis. Distant metastasis like ये lungs में आता है, वो नहीं है। Distant metastasis is present means in that also 1A, 1B, 1C ऐसा है। 1A is non-regional lymph nodes. That is इसके सामने का lymph nodes का not सामने वाला non-regional lymph nodes are involved है, तो M1A, and if bones में होते तो M1B, and in other sites का मतलब है breast में होता है, thyroid में होता है, ऐसा है तो M1C लिखता है। So that is the staging, TNM classification of prostate cancer. Next slide. This is also one method to find out whether this treatment it is treatable. वो treatment के लिए ये है Gleason's grade and score.
सो ये तो जो होता है 1 to 5 वी हैव टू गिव, ये 5 पॉइंट्स है इसमें। अभी 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट वन इज स्मॉल यूनिफॉर्म ग्लैंड्स है। हम जो एग्जामिन करने टाइम में स्मॉल स्मॉल यूनिफॉर्म ग्लैंड्स है। यूनिफॉर्म का मतलब है रेगुलर शेप वाला, नॉट इरेगुलर शेप वाला स्मॉल स्मॉल ग्लैंड्स है तो वी हैव टू गिव 1 मार्क। एंड more stroma between the glands. If we are seeing in the histopathological, stroma is more in between the glands है तो we have to give 2 marks. And distinctly infiltrative margin है तो 3 marks देना है। Irregular masses of neoplastic glands है तो 4 marks देना है। And only occasionally gland formation है तो 5 marks देना है। जैसा इसमें सब नहीं होता है, 2 या 3 पॉइंट्स ही आता है। सो for example, small uniform glands है, irregular means distantly infiltrative margin है, only occasional gland formation है तो 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5, so 4 and 9 ऐसा ऐसा आएगा। And the Gleason's grade is more frequently type that second most, that is like 3 + 4 = 7 is more worse than 4 + 3. Sorry, 3 + 4 = 7 is worse than 4 + 3 = 7. So if the score is less than 7, it is good prognosis. That is, we can give some treatment and we can save the patient. And if it is 7 or more, 7 से more है, अभी मैंने बताया ना 9 आ गया ना, ऐसा है तो worse prognosis है, it is very difficult to treat and the chances of losing the patient is more. So next slide. Now coming with the clinical features, जो patient हमारा पास आता है क्या क्या features बताएगा। Commonly asymptomatic. This is the main problem with the CA prostate. कुछ most of the patients को कुछ symptoms नहीं होता है, कुछ symptoms नहीं होता है, and bladder outlet obstruction and so retention of the urine. That is, bladder से जो urine आता है, bladder के अंदर bladder तक urine आता है, मगर bladder से नीचे urine नहीं जाता है, क्योंकि ये प्रोस्टेट ब्लैडर को ऐसा कवर करता है, ब्लैडर का आउटलेट को या ब्लैडर का मुंह को ऐसा कवर करता है और इसके अंदर एक ग्रोथ है। तो ये ब्लैडर से आने वाला यूरिथ्रा को कंप्रेस करेगा, ये तो कंप्रेस और श्रिंक करेगा। तो इसके वजह से ऐसा एक टाइटनिंग के वजह से ब्लैडर तक यूरिन आएगा, इसके नीचे तक, नीचे के और यूरिन नहीं जाएगा। सो ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगा एंड रिटेंशन ऑफ यूरिन, ये यूरिन रिटेन होता है, यूरिन नहीं बाहर आता है, मूत्र आखादा होता है। Then hematuria and frequency, this is very important. Hematuria means blood is coming through the urine. इसका मतलब ये पेशेंट को है ना, समटाइम्स ये ज्यादा प्रेशर डालता है और ये प्रेशर डालना उसका आदत भी जाता है। लाइक आफ्टर 50 पेशेंट ऐसा प्रेशर जोर से डालकर ही यूरिन पास करता है, तो ये आदत बन जाता है और पेशेंट को ऐसा समझ जाता है ऐसा मेरा एज के हिसाब से मुझे ऐसा प्रेशर डालना है। तो थोड़ा टाइम के बाद है ना ये आदत बन जाता है और पेशेंट को नहीं पता है ये खुद प्रेशर डालता है। तो इसके वजह से ये ज्यादा टाइट होने के वजह से, ज्यादा प्रेशर डालने के वजह से blood will also come along with the urine. Then frequency का मतलब है जो थोड़ा प्रेशर डालता है थोड़ा यूरिन आएगा और उसके बाद यूरिन नहीं आएगा क्योंकि ये टाइट है। उसके बाद है ना थोड़ा ही जाएगा और 5 या 10 मिनट के बाद अगेन जाने का ये आएगा और थोड़ा जाएगा। सो इट इज लाइक 10-15 या हाफ आवर के बीच में 2-3 बार जाएगा, मगर पूरा नहीं होता है। पूरा इन कंप्लीट इवैक्यूएशन ऑफ द यूरिन will not happen. Urine will be in the bladder, मगर थोड़ा थोड़ा ही आएगा और वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाता है। Then pelvic pain, back pain, arthritic pain in sacroiliac joint and features, that is the features of secondaries. Secondaries का मतलब है
प्राइमरी ट्यूमर, प्राइमरी जो कैंसर है वो प्रोस्टेट के अंदर है। जो सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब प्राइमरी ट्यूमर वो स्प्रेड होकर दूसरा जगह जाते हैं तो हम सेकेंडरी कहता है, और उधर से और जाते तो हम टर्शरी कहता है। तो ये सेकेंडरी, इसका प्राइमरी ट्यूमर, ये जो प्रोस्टेट के अंदर का कैंसर का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बोन्स पर। तो ये बोन नियर बाय बोन है पेल्विक बोन। तो पेल्विक बोन के अंदर मेटास्टेसिस होता है तो पेल्विक पेन होता है, देन बैक पेन होता है, लंबार वर्टिब्रेस अफेक्टेड है तो बैक पेन होता है, आर्थराइटिक पेन जैसा भी होता है इन द सेक्रोइलियक जॉइंट। तो ऐसा सेकेंडरीज के वजह से ये हड्डी में दर्द होता है। On rectal examination, prostate feels hard, nodular, irregular, often with loss of median groove. That is, जो ये पेशेंट को ये एडवांस होते तो यूरिन नहीं अच्छे से जाता है, जाएगा, और हड्डियों में दर्द होगा, और कभी कभी मींस मोशन भी नहीं जाएगा, कब्ज होता है, पेशेंट को कब्ज होता है, डेली मोशन नहीं जाएगा। तो ऐसा अर्शस या कुछ अदर बीमारी सोचकर भी हमारा पास आएगा, और हम ऐसा इसके अंदर मलद्वार के अंदर देखते तो ये प्रोस्टेट हमको मिलता है, और वो प्रोस्टेट बहुत हार्ड और नोड्यूलर, इरेगुलर एंड लॉस ऑफ मीडियन ग्रुप जैसा हमें आएगा। Then incidental carcinoma after TURP. TURP is a treatment, transurethral resection of prostate. It is a surgery for BPH, benign prostatic hypertrophy, or after PSA analysis. So a carcinoma ऐसा जैसा एक इंसिडेंट और एक्सीडेंटल फाइंडिंग भी होता है। और PSA एनालिसिस, PSA इज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो ब्लड से हमें पता चलेगा। देन फीचर्स ऑफ रीनल फेलियर, रीनल फेलियर ऐसा है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरिटर, यूरिटर से किडनी, ऐसा ये स्प्रेड इसमें होता है, या यूरिटर ब्लॉक होने के वजह से यूरिन बैठ जाता है और रीनल फेलियर हो जाता है। देन एनीमिया सेकेंडरी टू एक्सटेंसिव बोन मैरो इन्वेशन एंड ऑल्सो ड्यू टू रीनल फेलियर, जो बोन के अंदर बोन मैरो भी ये खाया जा सकता है, और रीनल फेलियर दोनों के वजह से पेशेंट में एनीमिया दिखता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये कैंसर ऑफ प्रोस्टेट पेशेंट को ये बीमारियां समझता है, लाइक ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर कैंसर ऐसा भी समझता है। देन वेसिकुलो स्फिंक्टर डिस्नेर्जिया, then urethral stricture, then cystitis, bladder dysfunction जो डायबिटीज बीमारी में दिखता है, पॉलीयूरिया दैट ऑल्सो डायबिटीज में दिखता है, then myogenic न्यूरोजेनिक ब्लैडर, then सिस्टोलिथियासिस दैट इज ब्लैडर के अंदर मींस ये होता है, स्टोन होता है, ऐसा ऐसा फीचर्स, ये सब व्याधि का फीचर्स इसमें भी देखता है। सो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, urethral cancer, urethritis, stenosis of the urinary meatus, etc. Next slide. So rectal examination, this is also one of the examination that can be done by the doctor to see whether the patient is having cancerous growth or BPH growth. So it can detect the nodules within the prostate and the advanced stages. So rectum के अंदर से हम हाथ means finger लगाकर देखते तो इसके आगे prostate दिखता है. So in this picture it is very clear. So TRUS may also be used. TRUS is a transrectal ultrasonography. It's a scanning method. So through the rectum, scanning can be done, and in that also we can take a needle biopsy also. उसके अंदर से हमें doubt है तो उसके अंदर से ये rectum के द्वारा we'll insert a needle and we can take the cells. Irregular induration, characteristically stony hard in part or in the whole of the gland with obliteration of the median sulcus suggest of carcinoma. So ऐसा हमें फिंगर में ऐसा फील है तो irregular, stony hard, जब पत्थर जैसा हार्ड होता है, no particular shape है,
और median sulcus जो नहीं मिलता है, तो it is पक्का that it is a cancerous growth. Then extension beyond the capsule up to the bladder base and vesicles is diagnostic of the local extension of the capsule. So जो prostate होता है थोड़ा ही जगह में होता है, मगर if it is extending beyond that limit, it is pakka, it is a cancer growth. So through the rectal examination, we doctors can find the cancer. Next slide. So investigation, general blood body blood test like HP percentage, because जो ये patients में anemia ज़्यादा होता है, so anemia the patient will be anemic without any blood loss, because जो bone marrow भी और renal system भी fail होने के वजह से anemia will be there. So peripheral smear etc. can be taken so that the anemia can be find out. Next is the liver function test. Liver function test abnormal if the metastatic invasion is towards the liver. So thoda times usually patients will come after many months and all. So pata ये liver के अंदर, क्योंकि last सब every cancer will last end up in the liver. So जो liver में कुछ problem है या नहीं, वो देखने के लिए liver function test can be done. Next slide. Next is prostate specific antigen or PSA. This is very important. This is a particular test done to examine the prostate. So this is a there is a protein produced by the normal and the malignant cells of the prostate. This prostate specific antigen. So we can test this by taking the urine collection, and this aqueous biphasic solution will be put on that, and we can find out whether there is a PSA kitna hai. So PSA greater than 10 nanomole per liter is suggestive of cancer, and PSA greater than 35 ng per ml is almost diagnostic. It is like advanced prostate cancer. So PSA check kar. So PSA will be greater than 10 in benign prostatic hypertrophy and all. But if it is 35 se upar hai, to it is pakka that it is the prostate cancer. So this PSA is a very useful technique to, and that too with the blood and as well as the urine sample, it will be easy. Usually blood sample is being taken for the analysis. And as for acid phosphatase, that is acid phosphatase has been suspended, superseded by measurement of the PSA. This acid phosphatase also can be done to check the cancer. Next slide. Next is radiological examination. As I told that the secondary is towards the bone. So radiological examination, radiograph of this hip bone. See the hip bone. So the chest ka karte to, if there is any metastasis towards the lungs, that we can see. Then abdominal karte to, vertebrae and the pelvic bones can be seen. Then the bone appears dense, coarse, and it sometimes is difficult to distinguish the change in that. So it is easy to check the pelvic X-ray, chest X-ray to see the secondaries. Next slide. Then MRI can also be used to see the local disease. Just the tumor can be seen, and then we can see the extent of the disease. Then TRUS, that already I have told earlier, trans-rectal ultrasound. Through the rectal route, transducer is being introduced, and the prostate can be seen very nearly, and जो growth है उसका correct size, उसका features सब कुछ इस transurethral ultrasound से we can get. Next slide. Next is bone scan. Total bone scan can be done. क्योंकि ये less than means if it is greater than 35, better if the PSA is greater than 35, better to do a total body scan so that we can understand wherever if the cancer growth is spread. Next slide. Then the treatment.
treatment of the cancer, every cancer, not only the prostate cancer, treatment is based on the stage of the cancer and the age of the patient and the health of the patient. So this is very, very, very important. See, the stage of the disease, life expectancy of the patient and the patient's preference. Life expectancy is like if the patient is 90 years and if the patient has diagnosed with a cancer and cancer in the last stage, it's better not to do any big treatment to the patient, because the treatment itself can't be tolerated by the patient. So better, and the patient's preference. Patient को भी पूछना है या क्या treatment, if last stage में है तो radiation सब कुछ करना है. So PSA, that is prostate specific antigen, digital rectal examination and biopsy, Gleason's grades are used to predict the pathological stages. जो हम अभी तक जो पढ़ा है ना, जो सब कुछ PSA, rectal examination, then the biopsy report, then the Gleason's grade. I told no, the जो 5 points है उसका जो calculate कर 7 से ज्यादा है तो it is very difficult to cure. So ऐसा सब कुछ देकर पेशेंट से भी बात कर पेशेंट का प्रेफरेंस देकर पेशेंट का हेल्थ देकर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देकर ही ट्रीटमेंट कैन बी प्लान. So localized cancer can be treated by radical prostatectomy, radiation therapy and active monitoring. That is जो first stage है या कुछ spread नहीं है, the full examination, investigation we have done and the जो growth है जो prostate के अंदर ही है, जो prostate के अंदर है तो radical prostatectomy. Ectomy means prostate का वो जो lobe है उसको निकालता है. So radical, in a round shape, we are enucleating the growth. And जो normal side जो tissue होता है उसको भी हम scoop करेगा और उसके साथ radiation therapy like chemotherapy etc. will be done and active monitoring. Active monitoring का मतलब है like once in month for first few months, then afterwards once in 6 months, then once in a year, like that. फॉलो अप के लिए बुलाना है. नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस डिसीज इज पैलिएटिव एंड हार्मोन अब्लेशन रिमेन्स द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. दैट इज palliative means like we have to just take care of that patient. Most of the times the patient is very aged. He may be having different other diseases also like diabetes, hypertension, cardiac issues, sometimes may have survived a stroke. So there may be many many hurdles for us to treat the patient. So mainly palliative treatment करना है and hormone ablation. Hormone ablation का मतलब है जो gens होता है, males होता है, male hormones are produced till the are produced like till the death. So जो testosterone है और androgen है वो मेल हॉर्मोन्स को नीचे करना है और कम करना है. सो दैट इज द हार्मोन अब्लेशन थेरेपी. तो ये हॉर्मोन्स कम है तो इसका ग्रोथ भी कम होता है और दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. नेक्स्ट स्लाइड. Then radical prostatectomy, you can see the picture that it has been so surgery is been told like if it is a localized hai to we can remove the growth like this. So growth with the removal of the prostate, seminal vesicle, distal sphincter along with the reconstruction of the urethra can be done in the early stage. And open and laparoscopic robot assisted nerve sparing approaches are used nowadays. These are the how like open का मतलब है पूरा open कर ये निकलना या laparoscopic keyhole surgery के वजह से like that you can do the surgery like this. Then radical radiotherapy in the early carcinoma stage we can do the do the external radiation both अंदर और बाहर radiation देने के लिए. Then pelvic lymph node dissection with the iodine 125 radiation seeds with implantation that radioactive iodine can be placed inside the prostate so that it will give the radiation so that the radiation will kill the growth of the cancer.
Then bilateral subscapular orchidectomy. Orchidectomy means the removal of the total testis. टेस्टोस्टेरोन लेवल कम करने के लिए ये रेडिकल दिस प्रोस्टेट का जो ग्रोथ रिमूव करने के साथ साथ जो 2 टेस्टिस होता है, जो टेस्टिस को रिमूव करने का सर्जरी है ऑर्किडेक्टमी, so that testosterone level will remain less. Next slide. And ऐसा orchidectomy will be done in a condition of age between 60 to that 60 के बाद या 50 के बाद जो patients है वो families कुछ full complete है तो ऐसा orchidectomy will be done in that age, like in the after 50s to like 70 के बीच में. Then orchidectomy is performed to carry out put androgen ablation in the treatment of locally advanced T3, T4 stage. T3 is outside the prostate. T4 is near to other structures. It is getting spread or of metastatic disease. So orchidectomy should be done because testosterone level has to be kept into low level. Then TURP plus bilateral orchidectomy plus external radiotherapy for bone secondaries plus flutamide or Hornman is the commonly advocated method. So this is a combination of these surgeries and the treatment is being done nowadays. Like TURP. TURP is transurethral resection of prostate. That is through the urethra, urethra जो मूत्र जाता है ना उससे उसके through that like the laparoscopic surgery the जो ग्रोथ है प्रोस्टेट के अंदर वो निकलता है, जो कट कर निकलता है, दैट इज वन प्रोसीजर. उसके बाद बायलैटरल ऑर्किडेक्टमी थोड़े दिन के बाद, ये प्रोस्टेट का निकलने के थोड़े दिन के बाद बायलैटरल ऑर्किडेक्टमी दोनों टेस्टिस को निकलता है और उसके बाद रेडियोथेरेपी लाइक कीमोथेरेपी, एवरीवन मस्ट हैव हर्ड रेडियोथेरेपी फॉर बोन सेकेंडरीज, कुछ बोन में कुछ है तो उसके लिए. देन फ्लूटामाइड एंड हॉर्मोन इज द अंदर देने वाला मेडिसिन है, ऐसा वो हार्मोनल अब्लेशन के लिए. Then medical castration, that is medical forms of androgen ablation have been available since discovery of silvestrol and other common available treatment to reduce the testosterone levels. So थोड़ा medicines देता है so that the testosterone or the androgen, the hormone जो males का पुरुष hormones होता है उसको कम करने के लिए करता है. Androgen receptor blocking agents like flutamide and bicalculamide. And then suprapubic cystectomy sometimes may be done for the elderly क्योंकि ये bladder पूरा तरह से बंद होता है, so bladder के ऊपर एक काट एक स्लिट और एक इंसिशन कर यूरिन विल बी टेकन आउट, ऐसा भी sometimes will be done. Then tumor vaccines can be done. Then bone secondaries are treated using radioactive strontium and all like that. Vitamin D etc. should be given. Next slide. So in Ayurveda, this first stage में we can give Varnadi Kashaya, Kanchanara Gugulu जैसा medicines they can be given in the first stage. फर्स्ट स्टेज की जो एक ग्रोथ है और यूरिन का ब्लॉकेज सब कुछ है तो ऐसा मेडिसिन देकर ये ग्रोथ का कम कर सकता है. एंड अदर थिंग्स लाइक यूरिन अच्छे से जाने के लिए भी मेडिसिन दे सकता है. अदर देन दैट फॉर अ कैंसर in the third and the fourth stage, first and second stage can be treated by Ayurveda medicines and all, but third and fourth stage should be done with surgery and the chemotherapy and the radiotherapy should be done and the patient's life has to be saved. Thank you.